तो ठीक अछि परीक्षा अनुसार प्रिपरेशन करियो तो सेति आपण नहीं आमे मात्र जेतिकी ओरिएंटेड एग्जाम ओरिएंटेड थ्योरीज को पढेबु जदि कोनोसी एग्जाम पे आपण माने थ्योरी प्रिपरेशन करजंती इवन जे कोनोसी भी एग्जाम हो ताले आपण माने हम ई चैनल को फॉलो करि परिबे ठीक अछि हमर ई चैनल प्रत्येक क्लास को जदि थ्योरी पे आपण मानकर दरकार ताले देखि परिबे एवं आ परे हम एमसीक्यू सेशन जानिबु जस्ट हमर आउ दुई तीनटा क्लास मींस ए वीक रो क्लास परठू हम एमसीक्यू सेशन आनिबु ठीक अछि कंफर्म आगे फर्स्ट पीवाईक्यू विद द डिटेलेशन विद द फैक्ट तापरे हमें कौन करिवु ना आउ जो न्यू न्यू एमसीक्यूज रहला रिलेटेड टू 2023 B.Ed एग्जामिनेशंस एवं अदर एग्जामिनेशंस ता रिलेटेड हमें एमसीक्यूज करिवु ठीक अछि त हमर एटा प्लान रहिबो तो नेक्स्ट हला कोन ना क्लास को बढ़िया पूर्व चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दियंतु जा फले हमको मोटिवेशन मिलियो एवं हमें आहुरी न्यू न्यू वीडियोस आपण मान पय आनी परिबु ता सहित छुआ हमर ए सब टॉपिक्स का से रहउची ना एनसीईआरटी बेस्ड रहउची ठीक अछि तो ई सब तुम मन को में प्रॉफिट्स रहउची प्रॉफिट जोडी अछि मींस तुमे सेठी कोन कोन करि परिबो ना फायदा उठे परिबो तो रहला आजिकर मोटिवेशन क्विट द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट no one can take it away from you ठीक अछि जे पढिबार गोटे जिंस हला कोन बा पढिबार गोटे मोटिव हला कोन छ जे एई जिंसटा केही भी तुम पाखो केबे छोड़ै परिबे नाही ठीक अछि एटा केही भी तुम पाखो केबे छोड़ै परिबे नाही जते तुमे ज्ञान आहरण करिवो जते तुमे ज्ञान नबो ठीक अछि ज्ञान माने माने नॉलेज में एक्वायर करिवो सेटा तुम पाखो केही भी छ नै परिबे नाही एटा हला मेन थिंग सेति पय छ मेन मोटो हला तुमे निज नॉलेज को सब बेले छ एक्सपांड करो ऑलवेज बी एक्सपांड ठीक अछि काहे ना इन फ्यूचर किछि न होले भी तुमर ए नॉलेज ही तुमको बहुत बाटो को नहीं जीवो ठीक अछि ए नॉलेज ही तुमको छ केतले एग्जाम भी क्लियर करे दो बस सेतकी छ किछो मोटिव दरकार सेतकी हार्ड वर्क दरकार नॉलेज एक्वायर करिया पे ठीक अछि जेम कि हम यूपीएससी एग्जामिनेशन पे बहुत गुड़िया पाठ पढ़िया को पड़ुची से माने बहुत प्रकार नॉलेज नउजंती अबाउट ऑफ पॉलिटी अबाउट ऑफ हिस्ट्री अबाउट ऑफ इकोनॉमी अबाउट ऑफ ज्योग्राफी अबाउट ऑफ सोशियोलॉजी अबाउट ऑफ इंटीग्रिटी ओके सब किछि सेम दिया तो तुमरो ब्यूटीफुल थिंग वर्ल्ड रो कोन ना तुम नॉलेज को के केबे तुम पाखर छोड़े नहीं पारिबो नाही तुम एमतिया बुढ़ा बुढ़ी भी लोक कथा सुनथियो जे पाठो की केबे छोड़े पारिबो नाही देखो आगो को जीवा nature of Indian economy structure and key features since independence India has a mixed economy India economy is basically based in the contribution of service sector currently provides 60% share of the GDP and near 53 and near about 53 of its population is depend on the agriculture माने currently जदि gross domestic product GDP रो full form छ मन रखो what is the full form of GDP what is the full form of GDP ठीक है जी what is the full form of GDP एटा भलो भाबरे मन रखो जे ग्रोस देखा जाउची ना छाड़ो रेड कर दो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ठीक अछि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एटा हला हमर एबे माने कोन जीडीपी रो फुल फॉर्म एवं 60% ऑफ जीडीपी हमें किए ना हमर जो सर्विस सेक्टर अछि ठीक अछि सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करछ ठीक अछि तो एटा हला मेन मोटो तो छ हला मिक्स्ड इकोनॉमी रो अर्थ कोन ना मिक्स्ड इकोनॉमी हला कि पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर मिसी प्राइवेट एवं सरकारी उद्योग एवं घरोई उद्योग मिसी गले ताको मिक्स्ड इकोनॉमी कहवा जाय सरकारी उद्योग एवं घरोई उद्योग मिसी जाय कि ताको कोन करचनी ना मिक्स्ड इकोनॉमी करचनी ठीक अछि एटा मन रखियो तापर नेक्स्ट जीवा तुमन को छुआ एडी मो फोटो आसी होतो सेति पय ए पोर्शन ता देखा दउन जेतले आगो को पढेबी मो एटा को उठेई देबी ठीक अछि उठेई नेबी डोंट वरी तापर देखो since the independence since the India
since the independence India एटा features of Indian economy पढ़िया हमें छुआ Indian economy रो features कौन since the independence India has been a mixed economy India's largest public sector were responsible for the public employment and revenue to the economy ठीक अछि हमें कौन कहबा छुआ जे हमर independent थारु हमें सरकारी उद्योग एवं घरे उद्योग को प्रमोट करछे ठीक अछि एवं परे परे हमें पुरी लिबरलाइजेशन एटी देखो ए जिंसडा अछि ए जिंसडा को भी परे बुझेबा ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛେ କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଛୁଆ ଆମ ଜିଡିପି ଟୋଟାଲ ଭୁଷୁଡି ଯାଇଛି ଜିଡିପି କହିତେ ଗଲେ ଆମ ଦେଶର ଜିଡିପି କହିତେ ଗଲେ ନା କେ ବରାବର ଅଛି ମାନେ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ହଁ ନା ନାହିଁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବେ ଗୋଟେ ପାୱାର କଣ ନା ମ୍ୟାନ ପାୱାର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ମ୍ୟାନ ପାୱାର ଅଛି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏହାକୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ବହୁତ ହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଗେଇ ପାରିବ responsible to providing employment and revenue to the economy okay ଆମେ ଯଦି employment generate କରିବା ଏବଂ revenue ବି generate କରିବା କାହା ପାଇଁ economy ପାଇଁ then ଆମ ପାଇଁ possible କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ largest economy ଅଛି ବା largest main power ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଏବେ currently ଚାଇନା କୁ ବି ଆଗେ ଦେଇଛେ ଛୁଆ ଚାଇନା କୁ ବି ଆମେ ଆଗେ ଦେଇଛେ ଚାଇନା ବି ଆମ ଆଗରେ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ ଚାଇନା କୁ ବି ଆମେ ପଛରେ ଛାଡି ଦେଇଛେ main power ରେ ଠିକ ଅଛି ଏଟା ମନେ ରଖିବ next ଦେଖ India's share in the global export and import increased from 0.7% and 0.8% respectively in 2000 to 1.7% and 2.05% in 2012 as per the WTO estimate. WTO ର full form chart. What is the full form of WTO? World Trade Organization. World Trade okay World Trade Organization okay तो तुम मान को छुआ गोटे क्वेश्चन यार हेडक्वार्टर कोठी अछि where is the headquarter of World Trade Organization where is the headquarter of World Trade Organization ଏବଂ ଏଠି कोन କହିला छुआ जे 2000 मसिया रे जतले माने इंक्रीज 0.7 0.8 थिला 2012 मसिया रे एटा 1.7% एंड 2.5% इंक्रीज हिची देखो ताले ह्यूज अमाउंट एवं एबे भी छुआ এই ରେସିଓଟା ଟିକେ ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡ ଟା ଟିକେ ଆମକୁ ପକେଇ ଦେଲା ତଥାପି ଆମେ ଏବେ ଗ୍ରୋଥ ରେ ଚାଲିଛେ ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ Indian economy overviewed was highly inspired by the Soviet Union's practice post-independence. Okay, post-independence ପରେ ଆମେ mainly କଣ କାହାକୁ follow କରୁଛେ ନା Soviet Union ର economy କୁ follow କରୁଛେ. Overview the highly inspired the Soviet Union practices post-independence. ठीक ଅଛି? It had been a recorded growing rate not greater than 5 jump till 1980. The strengthened growth was termed by the many economists as the Hindu growth rate. Okay, এই जो नेम दे दिया गला कोन ना स्टैंडर्ड ग्रोथ रेट बा हमर जो ग्रोथिंग टा होची बा हमर जो इकोनॉमी जो बूस्ट होची बा बढ़ुची ठीक अछि ताको कुहा गला कोन ना हिंदू ग्रोथ रेट टा एति भाबरे जंप करची इन द 1992 द कंट्री unharassed into the liberalization regime okay कंट्री कोन कला छुआ लिबरलाइजेशन को बाबा ए जो घरोईकरण को बा जो थिला माने लिबरलाइजेशन को एटा उठेई देला ठीक अछि एबे समस्त को लिबरलाइजेशन रो गोटे सिंपल फंडा तुमको बुझेई दोची छुआ मींस एटा हला छुआ ऑल वर्ल्ड रो सब कंपनीज को हम भारत उडा कुछ भाई आसो समस्ते कोन ना व्यवसाय करो समस्त रेवेन्यू जनरेट करो ठीक अछि तो एई भलिया जिंसटा तार अर्थ therefore the economy started scaling upward the new trend in the growth was new Hindu growth rate okay এবং তাকু কোয়ালা যে new Hindu growth rate ঠিক ଅଛି ଏବଂ ୟାକୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉନଥିବ ଏବେ ଦେଖା ଯାଇଥିବ ଦେଖ ତ କହିଲା କଣ Hmm. India's diverse economy encompasses traditional village farming, modern agriculture, handcraft, and wide range of the modern industry and
मल्टीट्यूड ऑफ सर्विस ओके हमर छुआ इंडिया इकोनॉमी कहा पर बहुत प्रकार डाइवर्स अछि आमे तो फार्मिंग ऊपर इनकम करछे मॉडर्न एग्रीकल्चर ऊपर इनकम करछे हैंडक्राफ्ट माने हैंडलूम्स ऊपर इनकम करछे वाइड रेंज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री सब जो अब इंडस्ट्रीज आछि जेतिक भी न्यू न्यू इंडस्ट्रीज ग्रोथ होछि एबे जो एंटरप्रेन्योरशिप रो जो इरा चलछि बा ग्रोथ चलछि तो ए सब जिंस रो आमे इनकम करछे एवं मल्टीट्यूड ऑफ सर्विस आमे सर्विसिंग बहुत बहुत प्रकार सर्विस जनरेट करछे सेति पई हमर इकोनॉमिकल ग्रोथ चलछि सर्विस आर द मेजर सोर्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ account for more than half of India output to the less than one third of the labor force okay ମାନେ ଯୋଉ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ଟା ଆଗରୁ ଯେତିକି ଛୁଆ ଲେବର କାମ କରୁଥିଲେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଖଟିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଜୁରୀ କରିବା ବଟ୍ ତାକୁ ହିଁ ବହୁତ ହଟେଇ ଦେଇଛି କାହିଁକି ନା ଯେବେଠୁ ଛୁଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଲିବରାଲାଇଜେସନ କୁ ଉଠେଇକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ କରିଦିଆଗଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ 1992 ରେ ଲିବରା लिबरलाइजेशन एटा मोर हुएनी छ लिबरलाइजेशन को उठे देगी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया वाला ठीक अछि तो नेक्स्ट हला कोन ना बाहर काम करथले तो ये हला इंडस्ट्रियलाइजेशन हबारु लोक मानको जो लेबर फोर्स टाकू कमे दिया आइगी ताको सब सर्विस सेक्टर लगा वाला ठीक अछि जे तुम माने सेठी भी काम करी इनकम करि परिबो सर्विस आर द मेजर सोर्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ अकाउंटिंग फॉर द मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज आउटपुट विद इन लेस देन वन थर्ड ऑफ इट्स लेबर फोर्स ठीक अछि करंट एनालिसिस करिवा ठीक अछि करंट एनालिसिस जति हम पाखे डाटा अछि ताकू नै करिवा द करंट जीडीपी फैक्टर कोस्ट इन एट 2004 to 5 प्राइसेस कोन कहला ना जीडीपी हला कोन धर जो एठी हमें कोन करिवा धर जो 57 लक्ष ओके 57,48,564 कोटी टंका जीडीपी फैक्टर बा करंट जीडीपी कोस्ट थिला केते 2013 टू 14 पर कैपिटा इनकम एज द करंट प्राइस ए करंट प्राइस अनुसार पर कैपिटा इनकम थिला केते 74,920 टंका ठीक अछि केते 2013-14 रे स्टार्ट ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग रेट एट द करंट मार्केट प्राइस एज ऑफ द जीडीपी इज फॉर कौन ना 2/11/2022 इज 30.8% ए स्टैट्स टा छ एबे नाही एबे चेंज हेइची एबे तो नुआ स्टैट्स आसीजी तो ए स्टैट्स सेतेबेले छ ग्रोथ थिला टर्शियरी सेक्टर कंट्रीब्यूट 56% ऑफ जीडीपी इन 2012-13 the total food grain products production is 265 million tons in million tons छुआ केतले 2013-14 रे इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट इज 1.8% of the total trade okay and India share in the total world export in 2.5% but ebe chua and total size of Indian population 1.26 billion okay तो छुआ एबे किंतु ए जो स्टैट्स था छुआ पूरा फुल चेंज ही ठीक अछि एबे मिनिमम बिलियन एति 1.45 बिलियन इज द पॉपुलेशन एवं छुआ जो जीडीपी जो करंट जीडीपी जो कैलकुलेशन ता अछि नै 1 माने कोन 1 करोड़ पाखा पाखी धरलानी ठीक अछि एवं सबुथरे आगे लानी ठीक अछि एबे करेंटली कुआ जाउ जे जो करेंटली पर कैपिटा इनकम ता छुआ केते अछि 1,35,000 ओके 1,35,000 पाखा पाखी अछि ठीक अछि 1,35,000 1,50,000 नीचे जाउची हमर पर कैपिटा इनकम छुआ ठीक अछि बुझी पारछो Chapter 9 Beating America and China, India saw the highest FDI okay, inflow of the new projects among all nations in the first half of the calendar of 2015. To boot, India attract 31 billion against the 12 billion in the first half of the last year of the capital income apex for the foreign companies, while the China and USA attract 28 billion and the 27 billion respectively same period. ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଆମେ 12 ବିଲିୟନ ବେଳେ 731 ବିଲିୟନ ର ହେଲା ଇକୋନୋମି ଏଠି କଣ ନା କ୍ରିଏଟ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଛୁଆ ଚାଇନା ୟୁଏସଏ କିନ୍ତୁ 28 and 27 ବଟ୍ ଛୁଆ ଏଟା କିଛି ଫରକ ପଡେନି ସେତେବେଳେ ଦେଶକୁ ଛୁଆ କିଛି ଫରକ ପଡେନି ବିକଜ ଅଫ ଦିୟର ବଜେଟ ତାଙ୍କ ବଜେଟ ଛୁଆ ଆଗରେ ଆମେ କିଛି ବି ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ବଜେଟ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ବଜେଟ ଆଗରେ ଛୁଆ ଆମ ଦେଶ କିଛି ବି ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଦେଶର ବଜେଟ 22 ଟ୍ରିଲିୟନ କୋଟି ଟଙ୍କା ठीक है जी 22 ट्रिलियन कोटी टंका करोड़ ओके यूएस डॉलर ट्रिलियन कोटी टंका चाइना रहला छुआ कते 13 ट्रिलियन ओके ता जगह हम इंडिया रे कते 5.9 5.3 5.2 ट्रिलियन
माने 2 गुण रु अधिक यूएसए रो छुआ 3 गुण 4 गुण पाखापाखि अधिक ठीक अछि तो सेति एटा किछि फरक पड़े नाही टोटल साइज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया हला 2015 रे 330 बिलियन कोटी टका थिला ठीक है फॉरेन रिजर्व माने हमर जो फॉरेन रिजर्व थाए फॉरेन रिजर्व द्वारा छुआ कोन हेइ थाए के कोइ पारि मते कमेंट सेक्शन रे को कमेंट सेक्शन रे को छुआ फॉरेन रिजर्व द्वारा कोन हेइ थाए व्हाट इज द मीन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया ठीक है या माने कोन मते के कमेंट सेक्शन रे को जस्ट वन लाइन export of the top five sector engineering, petroleum, gems, jewelry, textile, and pharmaceutical fell about 25% to the 13.33 billion in the August to 2022 due to global demand slowdown. These five sectors accounted for about 65% of the country's total merchandise export in 2014 and 2015. In August, the last year export that this sector stood 17.79 billion means तांकर जो ग्रोथ रेट बा तांकर जो इनकम रो रेशियो टाको सेमाने करछन 25% केते लेला 2015 बेले 13.33 बिलियन कोटी डॉलर बिजनेस करथिला किंतु 2014 15 बेले को 17 पूरा निहाती 4 गुण भाबे बढ़ी होछि ठीक अछि तो एटा से कहिछि तापर देखो प्रोवर्टी एस्टिमेटेड देखो एस्टिमेशन माने हमर जो गरीब बा दारिद्रता केते केते भाग अछि बा केते अछि देखो फर्स्ट the Rangarajan panel recommendation those who spend Rs 32 in a day in rural areas and 47 in town areas should not be considered poor से कोई छुआ कोन जे जो गरीब बा जो लोक 32 टंका गाँ रे एवं 47 टंका टाउन रे जदि खर्च करछि से पुअर नुहे should be not considered as poor result in an increase in the below poverty line population which estimated at 363 million okay in 2011 2012 compared to 270 million estimated in the Tendulkar formula in increase almost 35% माने से गोटे एस्टिमेट करथिले जे आमो इंडिया रो पॉवर्टी लाइन टा 363 मिलियन जेतले अछि किंतु सेठी 35% ग्रोथ रेट माने कमी होची पुअर रेट तो सदाले कमी होछुआ जेते हिउची 270 मिलियन that means 29.5% of Indian population live below the poverty line define the Ranganathan committee से कहूची जे आम भारतर 30% लगभग 30% लोक हैला कोन ना बिलो पोवर्टी लाइन रे रहउचंती ठीक अछि Ranganathan committee against 21.9 according to the Tendulkar committee ठीक अछि 2009-2010 Ranganathan has estimated that the share of the BPL below poverty line group in the total population was 38.2 translating into the decline in poverty ratio by 87% point over a 2-year period Indian economy and a mixed economy combination of the Indian economy देखो it very important এটা मन रखियो बहुत थर मिक्स्ड इकोनॉमी क्वेश्चन पड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी रे भी क्वेश्चन पड़ेला मिक्स्ड इकोनॉमी काहा को कहा जाय छुआ ठीक अछि तो एवडा तो तुमको स्टार्ट जस्ट बुझिया पई कहूची जे फिगर आउट करिया पई कहूची एवडा किछ मन रखिया दरकार नै बट जेठी छुआ मन रखिया पई कहूची सेठी टिके मन रख दियो ठीक अछि जोडा तुमको कहूची सेटा स्टार्ट से किछ मन रखिया दरकार नै जेठी टिके कहूची छुआ एटा इंपोर्टेंट एटा मन रख दियो किंतु जेमतिया कहदिनी स्टोरी बुझेबा को हेले टिके तार इंट्रोडक्शन दवा को पड़े सेमते तार एटा इंट्रोडक्शन ठीक अछि कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ठीक अछि मु जो तुमको कहिथिली माने सरकारी एवं घरोई उद्योग currently India is the considered one of the most developing country in the world हाँ ना नहीं most developing country एबे भारत अछि हाँ के जगह रे मोस्ट डेवलपिंग कंट्री भी लेखचंदी बिकॉज ऑफ आमे नहीं 135 टू 150 लाख पर कैपिटा इनकम हे गेलानी ठीक अछि आ किछि वर्ष पर तळे हमर 4,35,000 ऊर्ध्व हे जिवो सेतळे आमे डेवलप कंट्री हे जिवा ठीक अछि because of its nature part of the agriculture is total GDP is decreasing part of the service sector is increased or the contribution of tertiary sector is increased in the GDP of year basis by basis ठीक अछि हाँ नहीं जस्ट हमर जदी कोरोना नो आस्थांता ताले कोआ जाउची जे मिनिमम कोरोना जदी नो आसी थांता ताले हमरो मिनिमम
केते जीडीपी छुई था छुआ मिनिमम केते जीडीपी था ना 9% जीडीपी ग्रोथ ही था बट एबे हमें 6.25 6.75 6.85 जीडीपी रे वेरी करछे ठीक अछि फॉर बिफोर कोरोना एतिकी थिला एबे भी आफ्टर कोरोना सेति बिफोर कोरोना 8 हेतिला आफ्टर कोरोना सेति हेछि काहे ना सारा देश रे इकोनॉमी भुसडी गई अछि त आम देश रे कोठी उठियो ठीक अछि The first 5 year plan India was launched in 1951 मन रखियो अच्छा प्रथम पंचवार्षिक योजना बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट 5 year plan एटू इंपोर्टेंट आसिला बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास एटू स्टार्ट हबो जे फर्स्ट 5 year plan केबे इंट्रोड्यूस हैला छुआ 1951 रे इंट्रोड्यूस हैला कहां को समय रे इंट्रोड्यूस हैला जवाहरलाल नेहरू को समय रे इंट्रोड्यूस हैला द प्रेजेंट गवर्नमेंट हेड डिसकंटिन्यूअस 5 year गवर्नमेंट 5 year ये एबे तो 5 year जो प्लान टा एबे नाही एबे कोन हेई छुआ नीति आयोग ठीक अछि एटा तो छुआ तुम मान को पई क्वेश्चन एटा फुल फॉर्म कहबो एटा 2015 रे स्टार्ट हैला ठीक अछि एवं तुम माने छुआ यार फुल फॉर्म कहबो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग ठीक अछि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग ओके तो आज के पई छुआ एतिकी थाओ जस्ट गोटे इंट्रोडक्शन क्लास तुम मान को सपोर्ट दरकार तुम माने बस सपोर्ट करू था जोटा न बुझी पारतो सेटा मते कमेंट सेक्शन रे पचारो जे गुडे क्वेश्चन कहूची से गुडे आंसर दियो देन हमें आगो क्लास रे हमें 5 ईयर प्लान पढेबा ठीक अछि 5 ईयर प्लान परे आ ऑलमोस्ट आउ किछि बोधे कांसेप्ट नाही जदी आ गोटे दिटा कांसेप्ट थियो हमें क्वेश्चन थ्योरी क्लासेस रे कहि देबा ठीक अछि तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस थैंक यू सपोर्टिंग अस एंड बस एमतिया पढु था ठीक अछि।